So dear students, me Dr. SRC, and in today's class we are going to study the molecular orbital theory. It's going to be a very important class, and we are going to study in this particular class the fundamental aspects. So let us focus on the molecular orbital theory. We can note down the heading for this class, the topic, that is the simple MO model, advantages and drawbacks. Simple MO model, advantages and drawbacks. Let me start with the thought for the day. Let me start with the thought for the day दिए start करी. चलो यहाँ पे देखते हैं क्या है. ये आप पहचानते हैं क्या? इनको पहचानते हैं? ये है विंस्टन चर्चिल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, और उनका एक बहुत ही बढ़िया कोट है which is very nice, and that is attitude is a little thing that makes a big difference. आपकी एटीट्यूड क्या है, जीवन की नजरिया क्या है. कोई भी नेगेटिव काम होता है, कोई भी नेगेटिव इवेंट होता है, क्या आप टूट जाते हैं या रिकॉर्ड तोड़ देते हैं? कैसा है आपका एटीट्यूड? दैट विल डिफाइन, दैट विल डिटरमाइन द कोर्स ऑफ योर लाइफ. चलते हैं, आगे बढ़ते हैं. और आज का जो टॉपिक है उसमें डिस्कशन पॉइंट्स क्या क्या है, की डिस्कशन पॉइंट अच्छे. लेट मी सी हियर डिस्कशन नंबर 1, और वो है वाई एमओ स्टडी क्यों करेंगे. क्या ड्रॉबैक्स था पिछले मॉडल में, ताकि हमको एमओ पढ़ना है विथ रेस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कंपाउंड्स. और डिस्कशन नंबर 2 है एमओ कैसे करते हैं, एमओ का प्रोसेस क्या है, एमओ का प्रोसेस क्या है. डिस्कशन नंबर 3 है, एंड दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंपल एमओ मॉडल. सो वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द सिंपल एमओ मॉडल. दैट इज डिस्कशन नंबर 3, एंड डिस्कशन नंबर 4 वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ द सिंपल एमओ मॉडल. सो दीज आर द 4 डिस्कशन पॉइंट्स. व्हाई एमओ, how to do MO, the process, the simple MO model construction, and the drawbacks of the simple MO model. These are the 4 aspects we are going to study in this particular lecture. So I am going to divide the entire lecture in portion wise, that is lecture A, then B, then C, and stuff like that. Okay now, so let us focus here. Why MO? MO क्यों करना है, एमओ क्यों करना है, कैसे एमओ को करें. सो दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. एंड इससे पहले एक क्वेश्चन है, एंड वो है क्यों एमओ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट. व्हाई इज एमओ the bonding theory that is considered to be the best, that is considered best with respect to the VSEPR, with respect to the valence bond theory, why it is considered to be the best. तो इसको टॉपिक में जाते वक्त यहाँ पे देख लेते हैं. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, वीवीटी कहते हैं हमको, दैट गिव अस द क्वालिटेटिव पिक्चर. यहाँ पे देख सकते हैं दैट गिव अस द क्वालिटेटिव पिक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग. क्वालिटेटिव पिक्चर माने क्या है, मतलब क्या है कि बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा. कितना बढ़ जाएगा? वाटर का 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लोन पेयर बॉन्ड पेयर इंटरैक्शन. द बॉन्ड एंगल विल डिक्रीज. बट हाउ मच इट विल डिक्रीज? व्हाई 5 डिग्री डिक्रीज? व्हाई नॉट 4 डिग्री डिक्रीज? सो द 5 डिग्री 4 डिग्री, दीज आर द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स. एंड बढ़ जाएगा, घट जाएगा, ये दीज आर द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन गिव द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बट नॉट द क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट. तो ये वाला पहला पॉइंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है क्लास. ये वाला पहला पॉइंट है. और यहाँ पे देख सकते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. Either you are taking the VSEPR theory, the major theories I am talking about, the VSEPR theory or the hybridization theory. And so VVT, the shapes of the molecules and the bond length. So valence bond theory, the shapes of the molecules and bond length both are being said, and but in a qualitative manner by the valence bond theory. Okay now वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैनॉट प्रेडिक्ट, एज आई वाज टेलिंग, जैसे मैं बता रहा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैनॉट प्रेडिक्ट ए डिटेल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सम बॉन्डिंग सिचुएशन. एक डिटेल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस प्रेडिक्ट नहीं कर पाया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. क्वालिटेटिव ओके, शेप्स ओके, विद बॉन्ड एंगल्स ओके, बट विथ रेस्पेक्ट टू ओनली क्वालिटेटिव, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू क्वांटिटेटिव एनालिसिस. एक्चुअली it fails to describe some in-depth bonding situations accurately because ये क्यों नहीं कर पाया, that is very important. कर नहीं पाया, that is an information. क्यों नहीं कर पाया, that is a concept. So why it cannot, basically that is much more important than नहीं कर पाया.
क्यों नहीं कर पाया? आपको कोई রিজন पता है क्या? ডু ইউ নো এনি আনসার? তুমি কি জানো কোন আনসার যে কেন ব্যালেন্স বন্ড থিওরি করতে পারলো না? প্রিভিয়াস থিওরি যখনই দেখছো, you are seeing this, that we are drawing this particular, suppose this orbital, we are putting the electrons over here, and this is this electron, और ऐसे the बॉन्ड पेयर लोन पेयर, हाँ बॉन्ड पेयर लोन पेयर, जैसे बेरिलियम क्लोराइड का ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, एमोनिया का ये लोन पेयर है, और एक यहाँ पे बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, ऐसे बॉन्ड पेयर्स है। जब यहाँ पे देख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन को, जैसे देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली इन द प्रीवियस थ्योरी, इन द बैलेंस VSEPR theory, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड not as a wave, it is more considered as a particle. The dual property of the electron is not being taken in the VSEPR, in the valence bond theory, नहीं लिया गया है। तो अगर किसी आदमी का कैरेक्टर समझना है, उसके पॉजिटिव पॉइंट भी देखनी है, उसके नेगेटिव पॉइंट भी देखनी है, मतलब पूरी पॉइंट्स ना देखे तो उसके आदमी के कैरेक्टर हमको पूरी तरह समझ नहीं आएगी। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन में एक ड्यूअल प्रॉपर्टी है, जो डी ब्रॉगली और बाद में चल के डेविसन जर्मर से हमको पता चलता है एक ड्यूअल प्रॉपर्टी है, लेकिन अगर हमने ये ड्यूअल प्रॉपर्टी को एक्नॉलेज नहीं किया, जो कि हमने VSEPR बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्नॉलेज नहीं किया, तो पता ही नहीं चलेगा उसका मतलब असली क्या रूप है और वो कितना तक जा सकता है, नहीं चलेगा। इसलिए VSEPR और VVT में ऐसा नहीं लिया गया है। বাট মলিকুলার অরবিটাল থিওরিতে এটা নেওয়া গেছে। মলিকুলার অরবিটাল থিওরিতে কিন্তু তোমার এই জায়গাটা ধরেছে, এন্ড তাই জন্যই কিন্তু মলিকুলার অরবিটাল থিওরি কিন্তু পুরো জিনিসটা আরো বেটার ভাবে কোয়ালিটেটিভ এন্ড কোয়ান্টিটেটিভ বলতে পারছে। তার মানে কি রকম জায়গা বলছে দেখো, ইট ইগনোর্स द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। কোনটা? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इग्नोर कर रहा है, और यहाँ पे VSEPR ये प्रीवियस थ्योरी इग्नोर कर रहा है, मतलब ये वेव नेचर जो है वो इग्नोर कर रहा है, इसलिए वो पूरी बात नहीं कर पा रहा है, पूरा राइट नहीं बता पा रहा है। वाई MO इज बेस्ट बिकॉज MO कंसिडर्स ड्यूअल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन। MO क्या कर रहा है? MO कंसिडर कर रहा है ड्यूअल प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसलिए MO से एक्सपेक्टेशन भी है क्योंकि पूरी कंसिडर कर रहा है, और MO डिलीवर भी कर रहा है। अब आगे चल के हम बात करते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहा है, तो हमको पता चल गया बिकॉज MO इज टेकिंग द ड्यूअल कैरेक्टर बट VSEPR and valence bond theory is not taking. And let us focus on the major drawbacks. Just focus on the major. There are numerous drawbacks, but let us focus on the major drawbacks. And what are those? The major drawbacks of the valence bond theory क्या क्या है? पहला coordinate bonding का explanation adequate नहीं है। কোভালেন্ট বন্ডিং এক্সপ্লানেশন তাও ঠিক আছে, বাট কোঅর্ডিনেট বন্ডিং এর এক্সপ্লানেশন যেটা দেখা গেছে যে তার এক্সপ্লানেশন ফ্রম দ্য ব্যালেন্স বন্ড থিওরি ইজ নট ভেরি অ্যাডিকুয়েট, এন্ড देयर आर numerous they say exception type of things, but the explanation, when the explanation does not come we say exception, ऐसा। तो यहाँ पे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बेसिकली देखा गया कि कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग की एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं है। और क्या क्या अच्छी नहीं है देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बात कर रहा हूं मैं। सेकंड है मैग्नेटोकेमिस्ट्री। ये डायमैटिक बनेगा, पैरामैटिक बनेगा, दैट इज द मैग्नेटोकेमिस्ट्री। ওটা ম্যাগনেটোকেমিস্ট্রি আছে। ম্যাগনেটোকেমিস্ট্রিতে O2 যেটা আছে না, O2 के बैलेंस बॉन्ड थ्योरी डायमैग्नेटिक बोलते हैं। O2 आप अगर आप लिखो यहाँ पे ऑक्सीजन का, एंड आपको देखने को मिलेगा कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड सो बेसिकली O2 डायमैग्नेटिक है। लेकिन एक्चुअली में नेचर में O2 पैरामैग्नेटिक है। सो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी O2 को डायमैग्नेटिक बताता है और नेचर इसको पैरामैग्नेटिक। तो मतलब एक्सप्लेनेशन ऑफ O2 मैग्नेटोकेमिस्ट्री नॉट डन perfectly. And similarly you come across B2, C2 etc. the magnetochemistry is not matching with the nature. Something is being predicted by the valence bond theory and found to be completely opposite in O2, B2, C2 and few other molecules also. So the magnetochemistry aspect is not being particular explained properly using the valence bond theory. So that is the second point. And there is another thing, that is odd number of electrons. This is very important 3 points. It cannot explain the stabilities of some odd electron molecules because bond মানে আমাদের কাছে কি, bond মানে হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন, either that is being shared or
some basically is being acceptor and some is the donor. So this type of bond, this is a coordinate covalent bond, and this is basically sharing, so that is a purely covalent bond. So a bond means in terms of the covalency 2 electrons for us. But there are numerous molecules that is having odd number of electrons and still they are stable. So valence bond theory cannot explain the stability of the odd number of molecules. For example, valence bond theory cannot explain the stability of like this He2 plus. Now if you go for the He2 plus, helium has 2 electrons and He plus has 1 electron. So basically there are 3 electrons. So this is the He2 plus, there are 3 electrons between 2 He and He. So valence bond theory has no idea about this odd number of molecules. It does not have any idea about the odd number of molecules. Similarly is the case of H2 plus, and so H2 plus यहाँ पे 1 है, ये वाला है, this is odd number, so that cannot explain the odd number of molecules. So valence bond theory, there are 3 important drawbacks. Is that coordinate bonding not explained properly, magnetochemistry of some molecules not explained properly, as well as odd electrons molecules having stability is not explained properly. And there are numerous drawbacks. We are not going to go to all the drawbacks, but এই পার্টটার লেকচার এই অবধি, যেখানে আমরা শিখলাম অ্যামো বেস্ট, কেন কি অ্যামো ডুয়াল প্রপার্টি নিচ্ছে, ভিভিটি কোয়ালিটেটিভলি ঠিক আছে, কোয়ান্টিটেটিভলি পারছে না, অ্যামো পারছে ওখানে, एंड ভিভিটিতে অনেকগুলো ড্রব্যাক আছে, 3টে আমরা डिस्कस करलाम। सो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे अपने नेक्स्ट सब लेक्चर कहते हैं इसको, मतलब इसके बाद वाला लेक्चर आ रहा है, यहाँ पे ये समाप्त करेंगे। लेकिन सब लेक्चर में हम बात करेंगे एमओ कैसे करते हैं, क्या है एमओ करने का प्रोसेस। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, यू कीप वर्किंग हार्ड, give your best in life, and take care and bye for now.